Hi, good evening, everyone. So we are going to go ahead and continue with the same reading. And now we are going to go ahead and talk about some of the myths that we have about inward and outward orientation. There are three main myths that we have, and we are going to go ahead and discuss them in detail. Okay. The first myth that we have is that India is a very big country domestically. Big country in the sense big market exists in India domestically, and if we don't have to sell our products abroad, then India is enough to sell. समझो एक बारी बात को, क्या कह रहे हैं कि हम इंडिया के अंदर ही ज्यादा मार्केट क्रिएट कर सकते हैं. जितने हमारे एक्सपोर्ट नहीं होंगे उससे काफी ज्यादा हम इंडिया के अंदर ही मार्केट को क्रिएट कर लेंगे. So India has big, good amount of domestic opportunities, and whatever loss we have by not selling abroad, more than that can be compensated by selling in India. India में हम ज़्यादा बेच पाएंगे as compared to abroad. That's the first thing. Second thing, it says that many people believe that exports are, ये भी myth है, ठीक है, that exports do not lead to economic performance in India. तो वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा, अभी हम मिथ्स डिस्कस करें क्या क्या गलत बातें हैं. पहला, लोगों को लगता है कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है. मी हाईलाइट इट. पीपल फील दैट डोमेस्टिक मार्केट इज ह्यूज, जो गलत है. दूसरा, पीपल फील दैट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया डू नॉट लीड टू इकोनॉमिक performance of India, do not lead to increased GDP in India, do not contribute to GDP in India. तो लोगों को ये लगता है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं इन जनरल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते. दे डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू इंडियाज ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. दैट्स द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग, people feel that the export opportunities are further shrinking in the post COVID period. तो जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी कोविड से पहले थी वो अपॉर्चुनिटी अब नहीं है. ये तीन मिथ है. मिथ, these are wrong. These are things that they believe are there. Now today let's focus on myth 1 first. ठीक है. So in 2014 the PM spoke about India's advantageous 3 Ds. PM ने 3 Ds दिए हैं. फर्स्ट डेमोग्राफी, सेकंड डिमांड, थर्ड डेमोक्रेसी. ठीक है. इनमें से जो पहले 2 Ds हैं, डेमोग्राफी एंड डिमांड, ये इंक्लूसिवनेस के ऊपर फोकस करते हैं. दे फोकस ऑन द इंक्लूसिवनेस. सो द फर्स्ट 2 Ds, डेमोग्राफी and demand, imply that there is going to be huge demand within India, right? So it is believed that India has a large market with a lot of purchasing power. India के अंदर बहुत high purchasing power है और जो demand की market है वो बहुत high है. The question is, how are we getting to that number? कैसे आ रहे हैं वो number? So the first thing is Facebook users, number of Facebook users, telecommunication subscribers, because these are turning into hundreds of millions. So this is a belief that there is huge demand that can be generated in India. These are based on these numbers, right? Now, based on that, there are 3 claims that have been made. अभी हम myth 1 के अंदर ही हैं. तो myth 1 था कि इंडिया की डेमोग्राफिक मार्केट जो है वो बहुत ह्यूज है. उस मार्केट की कितनी ह्यूज मार्केट है वो, उसमें हमने ये पॉइंट रखा दैट वी हैव फोकस्ड दैट इंडिया हैज अ लार्ज परचेजिंग पावर. इंडिया के लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत हाई है. और उसी के अंदर हमने 3 क्लेम्स किए हैं. व्हाट आर दोस 3 क्लेम्स? द फर्स्ट क्लेम इज दैट the country has something which is called as scope of import substitution. स्कोप फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, क्या क्लेम किया जा रहा है कि देखो, हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है. वी डोंट हैव टू डिमांड प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. वी कैन सेट अप आवर ओन फैक्ट्रीज एंड वी विल सप्लाई, राइट?
rather than getting it from the abroad. So the first thing says that we have huge demand, and to fulfill this huge domestic demand, we don't have to import the product. We will simply do import substitution. We will set up huge factories in India rather than getting it from abroad. ठीक है. दूसरी बात ये कहता है, ये क्लेम है जिस पे हम बात कर रहे हैं, that we have to understand that when there is huge, this is very important, when there is huge market in India, जब बहुत बड़ी population है इंडिया में, मतलब बहुत ज्यादा लेबर फोर्स है, why are we wasting that labor force by only producing for India? We can at any point of time use that labor force to produce for outside world. हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड ऑफ इंडिया के लिए हो, सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड के लिए हो? Why don't we go ahead and increase the export base? Why don't we go ahead and we understand जितना ज्यादा डिमांड मतलब उतने पॉपुलेशन हाई है, जितनी हाई पॉपुलेशन मतलब उतना ज्यादा लेबर फोर्स है, जितना लेबर फोर्स उतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है. सो इफ वी कैन प्रोड्यूस वेरी हाईली, इफ वी हैव ग्लोबल export base, then we have a chance of going ahead and taking the position of China in the world, right? We know many firms are exiting China for geopolitical reason. जो firms China को exit कर रहे हैं, we can tap those firms. We can bring them here. We can say whatever China was supplying you, we will supply you that. We can increase the supply. Are you getting it? So we don't only want to go ahead and tap the domestic market. We want to go ahead and we want to also increase our export base, right? And then think about this. तो एक तो ठीक है, import substitution करना है हमें, but we don't only want to talk about domestic demand. We want to increase our export base. And the third point says that we want to go ahead and we want to understand that India can create national champions. ठीक है, we are national champions in new technology, in innovation. After US and China, the only country which can do that is India. हम क्यों इनोवेट ना करके एक वर्ल्ड के लिए कुछ बेटर एग्जाम्पल सेट करें, कुछ बेटर प्रोड्यूस करें? Why are we restricting ourselves to India? So these are the three claims which talk against inward orientation. Why we should not do inward orientation? Inward orientation क्या कहता था? It used to say that we want to go ahead and focus only on the domestic market. Our domestic market is big enough. यही तो myth one था. Myth one कह रहा है कि हमारी domestic market बहुत ज्यादा है. We don't need opportunities from overseas. Then the question is, how big is India's market? India की market कितनी बड़ी है? That is what we want to understand. So in order to understand how big is India's market, these are some of the numbers that you should focus on. So first, 15 to 45% of GDP, पूरा GDP भी हम contribute नहीं कर रहे हैं. That's the size of the market. It is smaller than China's market size, and it is just 1.5 to 5% of the global market, which means that ये पूरा claim ही गलत है that we have a huge domestic market size. The domestic market size is still small, right? And then it says that if we look at the population has a limiting purchasing power. So for this, the authors have gone ahead and they have used the definition of middle class. And what is a middle class? They have used two definitions. First is 15 per day per person, or 5.5 per day. They are saying that if you use the first definition, only 1 to 2% will fall in the category. And if you use the second definition, 12 to 15% will fall in the category. सिर्फ इतने ही middle class लोग हैं. इस पर हम नहीं बोल सकते that the country has huge purchasing power. If we compare this with China,
the numbers are much larger. So what is the conclusion to this myth 1? Conclusion is that India's market size is much smaller than China's market size. It is much smaller than the global market size. और आप क्या कह रहे हो कि ग्लोबली मत बेचो, डोंट सेल ग्लोबली, और वो ग्लोबल को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इंडिया की डिमांड से. इंडिया की डिमांड और ग्लोबल डिमांड का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. इंडिया की डिमांड तो चाइना की मार्केट साइज से भी छोटी है, and we want to replace the entire global exports that we are doing with the demand within India. So this would not be a right approach. So the myth 1 is actually a wrong myth. It clarifies that we should not go ahead and we should not focus only on domestic demand. I hope this is making sense. Okay, thank you.